So at the moment we are going to study about Gibbs phase rule. So what is Gibbs phase rule? The Gibbs phase rule is P plus F is equal to C plus 2. What does P represent? P represents number of phases. Uh, C represents number of different chemical components. Now suppose let us take a system which contains water, H2O, so water, steam, and N2. So now number of phases are there are only three types of phases: liquid, solid, and gas. So number of phases: water is available as liquid, steam is available as gas, and nitrogen is available as gas. So number of phases here are two: liquid and gas. F, degree of freedom. Number of different chemical components. Water and steam are one chemical component. Different chemical component means different chemical equations like H2O and N2. These are two different things. So here number of chemical components is equal to 2 plus 2. The F is equal to 2. So what does F represent? Degree of freedom means minimum number of independent intensive variables or properties required to define this system. So if you give two intensive properties, then this system will be defined. Minimum two properties should be there to define this system. Maybe pressure, temperature, pressure, intensive. Also you can give volume, intensive. Okay, intensive. This means now not volume, pressure, temperature, specific volume, specific entropy, specific enthalpy of the system. All these intensive properties are F represents a number of intensive properties. So volume is not an intensive property, specific volume is an intensive property. Now what does F is equal to 0 represent? F is equal to 0 represent that there are intensive properties required to fix the state of the system. This means that that F is equal to 0 is a fixed point. For example, F is 0 comes in triple point of water. So triple point of water is a fixed point. Even if you go to Mars, if you are in Earth, that triple point value won't change. The triple point value for water is 0.611 kilopascal and 0.01 degrees Celsius. Alone 0.611 kilopascal won't give the triple point. This both simultaneously will give the triple point, and it is a fixed point. It does not change even under any condition. No condition. When it means follow any process, just reach these values and you will get the triple point of water. You will get the water as 3 state. Just reach this state. So this is a definite point, and for definite points F is equal to 0. So degree of freedom is equal to 0. Degree of freedom means freedom is equal to 0 means fixed point. Suppose he asks that find the degree of freedom for any point lying in between saturated liquid and saturated vapor. So P plus F is equal to C plus 2. Number of phases is equal to, at this point, are 2. Liquid and gaseous phase. So 2 plus F is equal to, number of chemical components is 1. Water. Water means H2O, not water. H2O is the chemical component. So F comes as 1. So there is one intensive property which is required to define this state. So which is, as pressure and temperature are fixed, so if you just give the entropy, specific entropy value, you will get this point. So F is equal to 1 for any point in between here. Now explaining about intensive and extensive properties. First of all, work and heat are not properties, so they can be described as intensive or extensive. They are path functions. The intensive properties are pressure, pressure, specific volume, temperature, density,
specific enthalpy, specific internal energy, and specific entropy. All these are intensive properties. Extensive properties are volume, mass, enthalpy, entropy, internal energy. All these are that properties. Extensive. So use of specific volume is to determine the density. 1 upon density is equal to specific volume, or 1 by specific volume is equal to density. Why pressure is, remember, pressure is an intensive property. It does not, like, suppose there is a gas, suppose in this case there is a gas filled. Suppose if you, and at pressure P1, suppose if you take out half of the gas, still the pressure inside the system will be P1 only. One second. I have to reframe this. Don't worry, you will get that pressure is an intensive property. It does not depend on like mass. We are not talking about the pressure that is created by the gas by itself due to its weight, or not like anything. It is the pressure on the gas due to external, like piston, or we have pushed the gas. लाइक अगर एक में सिर्फ 2 kg आ सकता था, हमने 3 kg को चढ़ा, जिसकी वजह से प्रेशर डेवलप है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रेशर एंड इट इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. Now the change of the state means any change in the system can happen, I process can happen due to a process. I system can go from one state to second state with the help of this 5 processes that we have. There are only 5 processes, no other than the process. First is isobaric. Second is isobaric, reversible or irreversible. Second is isothermal, adiabatic, polytropic, isochoric. And this can be reversible or irreversible processes. Just we have to reach state 1 to state 2. Properties are exact differentials. This thing will be useful in like we cannot write dw upon dt because work is not an exact differential, but we can write du upon dt. Du upon dt, yes, because u is a property of the system. Yeah, u is the property of the system, like pressure, volume, temperature, specific internal energy, specific volume. All these are properties of the system. Of course, even if you multiply by mass, it is still a property. What is thermodynamic cycle? हम किसी साइकिल को रिवर्सिबल साइकिल कब बोलते हैं? जब उस रिवर्सिबल साइकिल की सारी प्रोसेसेस रिवर्सिबल हो. बस यही डेफिनेशन रिवर्सिबल साइकिल की. कि अगर सारी की सारी प्रोसेस रिवर्सिबल हैं तो उसका मतलब वो साइकिल भी रिवर्सिबल है. देखो, हम बोले थे कि रिवर्सिबल प्रोसेस होगी तो उसको सेम पाथ से अगर गया है तो अगर सेम पाथ से वापस आना पड़ेगा. ठीक है, पर रिवर्सिबल साइकिल में ऐसा कोई वो नहीं है. बस रिवर्सिबल एक साइकिल है, कम्बिनेशन ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस. उसको ऐसा कोई नहीं कि सेम पाथ से वापस आना पड़ेगा. ये है रिवर्सिबल प्रोसेस से बना हुआ एक साइकिल. 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 3 से, मतलब ऐसे से घूमता रहेगा. और कम से कम 2 प्रोसेस तो चाहिए एक साइकिल बनाने के लिए, जैसे कि ये और ये. देखो साइकिल बन रही है, 1 से 2 जा रहा है, तो अगर ये 2 से 1 इसी पाथ से जाता तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती. बट क्योंकि 1 से 2 जा रहा है और 2 से 1 जा रहा है, तो ये साइकिल बन गई है, पर कोई इसमें से एक प्रोसेस तो पक्का रिवर्सिबल होने वाली, इरिवर्सिबल होने वाली है. एक मतलब अगर क्वेश्चन पूछे तो एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल प्रोसेस चाहिए एक साइकिल बनाने के लिए. कम से कम एक रिवर्सिबल और कम से कम एक इरिवर्सिबल, मतलब सॉरी, रिवर्सिबल बहुत सारी, मतलब 2 रिवर्सिबल से हम नहीं बना सकते साइकिल.
जस्ट यहाँ इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, मिनिमम 2 प्रोसेस चाहिए एक साइकिल बनाने के लिए बस। वन और मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम जानते हैं कि एक 1 से 2 हम गए, यहाँ से 1 से 2 तो U2 कुछ आया, U1 कुछ आया। अगर हम 2 से 1 के कोई भी आड़े तेड़े बात करके वापस इधर पहुँचे इनिशियल स्टेट पे, तो फिर भी U1 उतना ही आएगा, U2 उतना ही आएगा, और P1 भी उतना ही आएगा, P2 भी उतना आएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी उतना होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम यहाँ भी इतना ही होगा, डेंसिटी भी इतनी होगी, डेंसिटी भी इतनी ही होगी, और टेम्परेचर भी यहाँ पे उतना ही होगा, टेम्परेचर यहाँ पे उतना ही होगा। मतलब इस पाथ से जाऊँ या ऐसे ऐसे करके, मतलब समझ लो I am going like this, from 1 to 2 I am going like this, carrying out a certain path, and from 1 to 2 I am going like this, carrying out this path. So इस केस में जो T1 और T2 की वैल्यू मिलेगी वो इस केस में भी T1 और T2 की वैल्यू मिलेगी, स्पेसिफिक वॉल्यूम की भी यही वैल्यू मिलेगी, डेंसिटी की भी यही वैल्यू मिलेगी, प्रेशर की भी यही वैल्यू मिलेगी, स्पेसिफिक एंथैल्पी की भी यही वैल्यू मिलेगी। सो पर वर्क और हीट की सेम वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक इंटर एनर्जी, इन सबको प्रॉपर्टीज़ बोला जाता है। ये सिर्फ 2 स्टेट पे डिपेंड करती है, किस प्रोसेस से आया वो डिपेंड नहीं करते। बस अगर 1 से 2 पहुंचा कैसे भी करके, तो वैल्यू दो हर उसमें सेम ही होगी। पर हीट और वर्क के साथ ऐसा नहीं, वो पाथ पे डिपेंड करते हैं। दैट्स वाई दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड पाथ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, the pressure, volume, temperature properties and all these properties.